हेलो गाइस, हाउ इज गोइंग? आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। सो मेरे ख्याल से सब ठीक होगा। तो आज की वीडियो में हम फिर मैथमेटिक्स के जो सिंपल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल पेपर एंड मॉडल पेपर, देयर इज़ अ माइनर डिफरेंस इन दैट वन। ठीक है, तो सिंपल पेपर और मॉडल पेपर में बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। ठीक है ना, कि क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन दिखा चुका हूँ मैंने। ठीक है ना, मैथ्स का लेके साइंस तक और जो भी है वो सारे दिखा दिया है मैंने। ठीक है ना, तो अब जो है वो अभी हम लोग मैथ्स का ही देख रहे हैं, क्योंकि मैथ्स का जो सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंपेयर करूँ मैं अदर सब्जेक्ट से, सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट। मैथमेटिक्स इज समथिंग हार्ड सब्जेक्ट, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट इज इजी, इफ इट इज डिडंट अंडरस्टैंड दैट इज totally waste. But chemistry is a very hard, we cannot understand. 11th 12th chemistry is very hard, not lots of hard, but actually we don't have to be a common sense of that one. So that's why is that also leave it. Okay now, because I'm showing this paper because of you, because you have to practice lots of. Okay now, mathematics is going to be hard in 10th class only. Okay now, that's why. Otherwise there is nothing in that one. Okay, all right, is it clear? Right, so you have to practice this question now. Okay now, and then 18 question, you can say this is a very easy question. The mean of the first 10 multiple of 6. Okay na? You can find which one. Okay, right. Okay, then s squared 3 is a rational number, and the square roots of the positive integers and irrational. Okay na? According to your choice, you can see that. All right, okay. Just focus on section C here, 26 to 29. Okay, 28 is it clear, but 29. Okay, let's see. All right, then 31, you can see a group considered of a 12 person, of which 3 are extremely patient. Okay, right, so you can read this. Okay now, if I read, then is it going to be something, video is going to be longer. I'm just trying to make the video in the just only in 3 to 4 minutes or 5 minutes. Okay now, because it's easy to watch. If it is a long video, then it is a difficult. Okay now, I think according to me it is a difficult. Short video is very easy, but long videos are difficult to watch. Okay now, the time is going to be short video is very easy to watch, and you can just add in the playlist. Okay now, right, so well, is it clear for you? Right, so I hope till here it is clear. It is clear, then see that here. All right, is it clear for you also? Well, read the test carefully and answer the questions. Well, I hope is it also clear for you. And in this, is it till here only, and then after the question answer is only there, so we don't need answer, because if we need the answer, then this video is going to be something longer and longer. So that's why we just leave the क्वेश्चन, जब स्लीप द आंसर नॉट अ क्वेश्चन. ओके ना, हमें आंसर क्वेश्चन ले लेना चाहिए, आंसर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम फाइंड करोगे तो आंसर निकल जाएगा. और तुमको डाउट हो कि ये आंसर नहीं मैच कर रहा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो तुम्हारे अंदर कि कोई, मतलब ये जो है मैंने लिखा है क्वेश्चन का वो सही होगा. सो यू कैन गो थ्रू द गूगल एंड यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. ओके, राइट, सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड कीप लर्निंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, एंड वी विल मीट अनदर वीडियो. जय हिंद.